Okay, so in today's class, we are going to start the rest of the cardiac medications, right? So the first one I want to discuss is anticoagulants, and then antiplatelets, and then also the thrombolytics. Okay, we're going to Okay. discuss three medications together. Why? Because I personally think they are very close to each other if you understand together. So first one is anticoagulants. Second, we will talk about the thrombolytics, TH. And then the third one, we are going to talk about the antiplatelets. I would say they're brother sisters, if you remember them again as a brother sister example, Yes. because very, very close to each other. You will see with me, right? So let's talk about the first one, anticoagulants. What is the meaning of anticoagulants? Why do we give someone anticoagulants medication, right? How do they work inside the body? What do we need to know for the NCLEX perspective, right? And what are you going to do as a nurse for sure 100%? Very, very, very common medication, just so you know, in the exam. So very, very important. Okay. So anticoagulants, first of all, if I say one word for the anticoagulants, right? They actually prevent formation of new clot. Prevent formation of new clot. If you want to remember the one word. So prevent formation of new clot. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਲੌਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅੱਗੋਂ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। So basically, लाइक अगर किसी का क्लॉट ऑलरेडी है ना, तो वो क्लॉट का साइज नहीं बढ़ेगा। ओके। ठीक है। और उसके साथ साथ नई क्लॉट भी नहीं बनेगी ओके। इसके साथ। सो एंटीकोएगुलेंट्स मेडिकेशन बेसिकली रिमेंबर कि ये जो क्लॉट होता है उसको नहीं तोड़ेगा, मतलब उसको कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं करेगा। ठीक है। मगर ये उसका साइज बढ़ने से भी रोकेगा, और उसके साथ साथ बॉडी में कहीं और क्लॉट नहीं बनेंगे। ठीक है जी। गुरपिंदर समझ लगा यहाँ तक? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। सो बेसिकली वन वर्ड, इफ यू रिमेंबर इन द एग्जाम गुरपिंदर, यू विल बी लाइक ओ दिस इज प्रिवेंटिंग न्यू क्लॉट फॉर्मेशन, राइट? क्योंकि ये जो ऑलरेडी पड़ा है क्लॉट उसको बढ़ने से रोकेगा, और दूसरे क्लॉटों को भी रोकेगा बॉडी में बढ़ने के लिए। सो इट्स बेसिकली प्रिवेंटिंग द एक्सटेंशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट, ओके। राइट? हाँ ठीक है, जी, यहां तक समझ लग गया है ना? हाँ जी, हाँ जी। So this is the first thing for sure, right? Now, second thing you need to know, Gurpinder, in which disease condition you need to give this medication, or you can give this medication, right? So you can give this one in case like myocardial infarction or unstable angina patient, someone already have a high heart rate like afibrillation patient. I'll talk about afibrillation when we will do ECG class. I'll discuss this one in detail also. And then DVT, if someone has a DVT, pulmonary embolism problem, right? Or presence of the mechanical heart valves. I would say you don't have to remember all these conditions by heart. You know why? If you look at it very carefully, Gurpinder, आप देखोगे कि ये जो सारी कंडीशंस है ना, हाँ सभी जी, कंडीशंस में क्लॉट कहीं ना कहीं होगा। होता है। हाँ, तो कहीं पर भी जो साटा क्वेश्चन आए, जो कुछ भी आए, अगर कोई डिसीज कंडीशन देख के ऐसा लगा कि हाँ इसमें ना क्लॉट लग रहा है मुझे, इसमें क्लॉट हो सकता है पेशेंट का, है ना, तो देन यू कैन गिव द एंटीकोएगुलेंट्स एंटीकोगुलेंट्स। मेडिकेशन। यू नो, इन अवर हिंदी पंजाबी लैंग्वेज, व्हाट डू वी कॉल्ड, वी यूजली कॉल दे आर द ब्लड थिनर, जो ब्लड को पतला करते हैं, ब्लड थिनर। कॉमन लैंग्वेज जो हम सभी लोग डेली बेस पे यूज करते हैं ना, राइट? हाँ दैट इज जी, द एंटीकोएगुलेंट्स मेडिकेशन। एंटीकोगुलेंट्स। ठीक है। हाँ जी। Now, where you cannot give this medication, definitely if someone is bleeding right now, you cannot give this medication in there, right? तो जो भी आपको देख के लगा, any medical condition you say and you feel like the person is bleeding in there, right?
or have an active bleeding in there, you don't give this medication in there, right? So like for example, they said active bleeding except for the DIC case. Remember DIC? Disseminated Disseminated. intravascular coagulation we ਹਾਂਜੀ. discussed in the Yes. maternity, right? Yes. Yes. Mhm. So in that condition, we don't give, we can give this medication, but apart from this condition, any other condition in the world, like which you think patient is bleeding right now, like bleeding disorder, bleeding blood dyscheresis, even if someone has a ulcer formation inside the body, because ulcer can also lead the bleeding, right? Or if Yes. someone liver kidneys are not functioning enough, you still don't give this medication, right? Because Yeah. zyada toxicity ho jayega, it will be Mhm. overworked then, right? And ਹਾਂਜੀ. then maybe brain injury cases, right? Hemorrhagic brain injuries. Again, you don't give this medication in there, right? Yes. I ਹਾਂਜੀ. hope it's making sense so far, Yes. right? Now, what do you think what can happen with the patient expectedly? Now, definitely this is a blood thinner. You want to thin the blood, right? So definitely bleeding is expected, right? Yes. But of course, it's on the dangerous side. But remember, hemorrhage, hematuria, epistaxis, Aesthetics. ecchymosis, bleeding gum, everything is expected. This is what I call the side Side effect. effects. Even thrombocytopenia is also the side effect because it's affecting the bleeding level too. And then hypotension, again, it's expected because someone is bleeding right now, Yeah. and the blood pressure can also go down when the blood get thinned in that case, right? ਹਾਂਜੀ. Do you know, Gurpinder, what is the thrombocytopenia? WCB WBC ਕਾਊਂਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। WBC count. Okay, hold on. So basically, this is about platelets, Oh, not sorry. about the WBC, right? So ਹਾਂਜੀ. platelets Outplayed. will go down. That is we call the thrombocytopenia, right? So if the platelets go down, definitely person can have the risk for the bleeding. So this is expected, because patient is bleeding in here. That's why. Does it make sense? ਹਾਂਜੀ. Right, Anna? Okay, so now we are going to discuss. So this is the basic information about the anticoagulants. Now we have different type of anticoagulants, right? The first type of anticoagulant, you can say the name of the medication in anticoagulants we're gonna discuss is the heparin sodium. Very important for the exam, right? Now, heparin sodium, what it does, right? Definitely, this is the mechanism how it leads the blood thinner inside the body, but you don't have to remember for the NCLEX, right? But definitely you need to remember that it's the anticoagulant and it's a blood thinner. It can prevent the thromboembolism, right? It does not dissolve the clot, but it prevents the new formation. So this is exact same what we just learned. So you don't have to repeat, right? ਹਾਂਜੀ. But in heparin medication, you need to remember the blood work. Which blood work do we do with the heparin medication, right? Now, I know a lot of times students in the exam, Gurpinder, they just forget like which blood work go with the heparin, which blood work go with the warfarin, right? So, Yes. what is the easiest method, Gurpinder ji? Just count your fingers, right? Count your fingers. We have 10 fingers in total for both Yes. hands together, right? So Mhm. if you see the word heparin, Heparin. So how many words is in there? Three, six, seven, right? 7. 7 words in heparin. That means you left with how many? Three, right? So if you're left with three, who is going to fix here in your fingers? So if you count the fingers, this will be your PTT. See, very easy method, right? Yes. Count your fingers, Heparin, and then you have the PTT 3. in your hand, right? So you never forget this one again in your whole life. Like this is about the PTT. Now, why do we need to do this blood work and what is the normal value of this one? Why do we do this one, right? Because, when the patient is on the medication, we need to see the therapeutic level. Therapeutic level means
Just to make sure medication काम कर रही है कि नहीं कर रही, you have to check some blood work for that patient in that specific amount जो आपको चाहिए होती है, ठीक है? तो what is the normal value you need to look after in there, right? So remember, here in the book they did not give it to you, so you need to write it down for sure. You do not need to remember 30 to 40 seconds. Why? Because this is the normal value when patient is not on the medication. Okay, not on the Okay. medication. Okay. But when the patient is on medication, it should be, let me write it down first. It should be 1.5 to 2.5 times the normal value, right? यानी कि इनको आप 1.5 से 2.5 गुना डबल कर दो इस वैल्यू को, ठीक है? तो ठीक। इफ यू मल्टीप्लाई 30, राइट, विद 1.5, तो कितना आया? हाउ मच? सो 30 into 1.5, you will get 45, 45. ठीक है? You will get 45. And then 40 multiply 2.5, तो कितना आया? 100, 100. right? That means when your patient is on this medication, right, you have to look, the value is the, please write it down because it's not written here in your books. So 45 to 100 second, Okay. ठीक है? यानी कि जब आपका पेशेंट इस मेडिकेशन के ऊपर होगा तो आपको ये देखना है कि उसकी वैल्यू 45 टू 100 के बीच में आनी चाहिए, ठीक है? अगर उसकी वैल्यू बिटवीन 45 टू 100 इज नॉट देयर, राइट, let's say your patient value is less than 45. Imagine maybe you got 35, 30, right, in the question, right? Okay. So what are you going to do first, right? If the value is too low or even little bit lower than 45, so what are you going to do and what does it indicates? So that means medication is not effective enough. Effectively. Medication काम नहीं कर रही. That means you need to call the doctor in that case, right? And you need to get the increase in the dosage of the medication. ये बातें ना यहाँ पे लिखी नहीं हुई. आई हाईली हाईली रिकमेंड गुरविंदर जी, मैं जो ये जो बता रही हूँ ना, प्लीज राइट इट डाउन दिस एवरीथिंग बिकॉज इट्स नॉट रिटन हियर, Okay. right? Mhm. So if the value is less than 45, right, then you need to call the doctor, call physician as a first answer, Mhm. because you cannot do any assessment in the patient because it's already indicated medication is not working, right? That means you can only call the doctor and get the order for the increase in the dosage of the Restore. medication, right? Mhm. But what about if I give you the value in the question now, Gurpinder ji, more than 100, right? Let's say I give you value 110, maybe 105, 115, 120, 25, kahin pe bhi, right? What does it indicate? That means the too much medication now inside the body, right? Okay. And that means what? Patient is bleeding right now, Bleeding. right? That means the first answer is you need to So, hold the medication if it's still running in your question, right? That means you need to hold the medication first. Number one answer, number one step. The second step, please write it down, is you need to quickly assess the patient for the bleeding, okay. right? That means you need to look for bleeding symptoms. For example, like it's already given here on the left side of the screen, like hematuria to nahi ho raha, epistaxis to nahi ho raha, hai na? So you look for those kind of signs with the patient, right? Ecchymosis, bleeding gum, whatever, right? But also look for any active bleeding. If it's like a surgery patient या कोई भी है तो किसी की dressing है, you have to check that quickly at the same time, है ना? Hanji. Once you quickly assess the symptom, then you took the vital signs, right? Okay. क्योंकि vital signs तो पता ही है already कि the blood pressure will be low and the pulse will be high in this Pulse case, will- right? So you cannot assess the vital signs first right away because it's already expected that you already know that the pulse will be high and the blood pressure will be low in this case, Low. right? So that means you need to, first answer is hold the medication. Second answer is quickly assess the patient for signs of bleeding, signs and symptoms Bleeding. of bleeding. And then third answer is definitely it's a part of assessment too, but you need to do the vital signs after.
right? Okay. And Okay. then your fourth answer is please call the doctor and get the antidote Okay. for this medication, right? हाँ जी. Now, which is the antidote for this medication? ये आपकी बुक में यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है? If you scroll down, right, and you go, I think it's on the next page पे होगा इसका. Hmm, I'm pretty sure interventions में दिया होगा इसका कहीं ना. Protamine sulfate. Protamine sulfate here, yeah, you can see here. Mhm. Protamine sulfate in point number E, right? हाँ So जी. you just give this antidote to this patient, right? Okay. Does it make sense? Yes. Right? See, these questions are very, very important for the NCLEX, right? Okay. So हाँ जी. reading will only not enough. We need to understand why we are doing this with this This. patient, right? The rest of the information, whatever given in here, I don't recommend to read this part, so you can take Okay. it out, right? Mhm. Because I already explained what the maximum you need to know for this medication, right? But Yes. definitely you need to know the nursing interventions, right? हाँ जी. Now, in nursing interventions, you already know you're gonna monitor what? PTT. You're gonna check platelet counts as well. You're gonna check for bleeding symptoms too. Bleeding. I already mentioned earlier. So it's clearly written here like bleeding gum, bruises, nose bleeding, which is your epistaxis, right? Mhm. And then hematuria, hematemesis, vomiting में भी blood आ सकता है ना? Or हाँ it could जी. be also means stool also, or petechiae also, है ना? So it could be anything. And then after that, instruct the client regarding measures to prevent bleeding. This is you can only do when the patient condition gets stable. जब Okay. patient stable है, then you can only do it, right? हाँ जी. Now, the antidote, I already mentioned it, right? And this Protamine is sulfate. they're basically telling you कि how do you give the heparin basically. Heparin is usually given by sub-Q method, ठीक है? और वो कैसे दे सकते हैं, कितनी साइज नीडल की दे सकते हैं, मैं रिकमेंड करूंगी कि एक बार स्किम एंड स्कैन कर लीजिए, ठीक है, फॉर द Okay. एग्जामिनेशन पर्पसेस. Mhm. बट रिमेंबर, डू नॉट एस्पिरेट और Okay. रब द मेडिकेशन और द इंजेक्शन साइड. जब आपने इंजेक्शन लगा दिया, डू नॉट रब इट, क्योंकि अंदर टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगा. और यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि हम लोग एस्पिरेट नहीं करते मेडिकेशन को जब आप एक बारी विड्रॉ कर लो सिरिंज के साथ, ठीक है? हाँ जी. तो you just have to change the needle after that Okay. before you give the patient. ठीक है जी. सो सबकी उससे प्रेफर होती है, बट रिमेंबर ये आईवी मेथड के थ्रू भी दी जा सकती है, Okay. ठीक है? हाँ, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, जस्ट नोटिस नाउ. तो आईवी इन्फ्यूजन मेथड के साथ भी दी जा सकती है. वो जो इन्फ्यूजन पंप होता है ना, जिसके ऊपर आप प्रेस करके अपना डोज वगैरह कैलकुलेट करके उसको सेट कर देते हो कि हाँ इतनी से ज्यादा मत जाए, है ना? तो दैट स्पेसिफिक पंप बेसिकली यू गोना यूज इट. ठीक है जी. हाँ जी. एनी क्वेश्चन अंटिल हेयर? No. नो? ओके. Now we are going to compare this medication with the next one, जो still we're gonna cover in the anticoagulants, ठीक है? Enoxaparin, not very important for the exam, Gurpinder ji, but still I Okay. recommend to remember the name. If you see parin, जब Yes. आपको थोड़ा बहुत parin याद रह जाएगा, you can still handle the question कि हाँ, this is about the Friends. anticoagulants, right? Mhm. Now, warfarin we have to discuss now, right? Okay. बट दोनों में फर्क क्या है, हेपरिन और वारफरिन में? रिमेंबर, हेपरिन वी गिव इन केस ऑफ द इमरजेंसी, ठीक है जी. हेपरिन वर्क्स वेरी फास्ट, तो यू गिव Okay. इन केस ऑफ इमरजेंसी. वारफरिन कम्स इन द फॉर्म ऑफ ओरल मेडिकेशन, ठीक Okay. है? तो For दिस वन long यू time कैन use. नॉट, हाँ, यू कैन नॉट गिव इन केस ऑफ इमरजेंसी. ये जब पेशेंट स्टेबल हो जाएगा देन ओनली यू कैन गिव इट. सॉरी, यू हैव अ क्वेश्चन Gurpinder? And I'm saying that warfarin is for long term use. Yes, warfarin is for the long-term use. Very Mhm. good. In one word, you can say, yeah, long-term use. So basically, once you think your patient is stable now, then the patient is going home. Patient needs such a medication which is useful for the patient to take it for long term, right? Then you can give the warfarin now, right? So same method, everything is same basically, like it prolongs the clotting time and everything. But what do we supposed to learn here is we're supposed to learn the lab value, PT and INR. ठीक है जी, related to the Yes. warfarin, right? So PT and INR again, how do you remember? Okay, this is PT INR with the warfarin. This is not PTT in the exam. The way we just count the fingers right now, तो we just did like heparin का जब आपने count किया, heparin fingers were like 7, right? And then 3 was PTT left, है ना?
जब ये फिंगर्स काउंट की थी, अभी हमने देखा था ना पीछे 3 पीटीटी वाला था, राइट? Mm-hmm. नाउ if you count the warfarin with me, Gurpinder ji, right now with me, just count your fingers. Warfarin. तो how many this is there? 8, right? 8 आ गई ना आपके Mm-hmm. फिंगर्स पर? Do you get it? Yes. Yes, okay. तो how many left? 2, 2. right? तो 2 कौन सी फिक्स होगी? Which one? PT. PT. ठीक है। और रिमेंबर, पीटी के साथ हमेशा आईएनआर जाता है, हमेशा जहां पीटी जाएगा वहीं आईएनआर जाएगा। Okay. ठीक है जी। सो Mm-hmm. इफ यू नो द पीटी, INR will always go with the PT, right? PT. So if you count your fingers, you see it's 8 digit for warfarin, 2 left will be PT, and INR is always go with the PT. This is how you can remember the the name of the lab, which For you're that. going to check in both cases. Yes, right? Yes. Now, for long-term complication, we already thought about it, but which medical condition for long-term complication? Again, almost same name exactly. जो आपने आगे फ्रंट पे देखे थे, कोई खास डिफरेंस नहीं है, it's exactly same. ठीक है जी? But this is once your patient just gets stable. ठीक है? Now we have to study the normal value of PT and INR. ठीक है? Mm-hmm. इसमें थोड़ा दिया हुआ है इसने ऑलरेडी। ठीक है? When the patient is already on this medication. ठीक है? तो here they already mention you. I can see here, just give me 1 second. हाँ, INR का दिया हुआ है, PT का नहीं दिया, सॉरी, INR का दिया हुआ है। तो PT I can see here, they only give you the normal value when the patient is not on the drug, right? Okay. But then they said 1.5 to 2 times, तो इसको फिर दोबारा वैसे कर दो, है ना? तो 11 multiply 1.5, that will be 16.5. Okay. ठीक है जी? And 16.5 to how much? 12.5 multiply by 2, because 2 is the maximum number now. Mm-hmm. Mm-hmm. So that is 25, right? So 16.5 to 25. That means PT का value आप कितना देखोगे when the patient is on this medication? 16.5 to 25, right? That means same story. If you see value less than 16.5, that means medication not working. Call the doctor, Working. get the order to increase the dosage, right? Mhm. And if you find more than 25, that means you need to Hold hold the medication first. first, then Check for call the bleeding. doctor. Yes, check for bleeding. No, don't call the doctor right away. Check for bleeding. Do Okay. some, check for bleeding, check for vital signs too. And then Then we have to call the inform doctor. doctor. Yes, then you call the doctor to get the antidote again in this Okay. case, right? But if you see the value of INR, right? INR value, they already give it to you here. If you see letter number D, they already give Yes. it to you, right? So the normal value when the patient is on the medication, which is 2 to 3. This is pretty simple to remember, I guess, Yes. right? And if you see less than 2, again, medication not working enough, Yes. right? But if you see more than 3, that means it's high dosage, right? Yes. You need to Yes. stop the medication, assess the patient for bleeding, do vital signs, and then call the doctor, the healthcare provider after that, right? Does that make sense now? Yes. Right? Now, another thing is, in this case is, yeah, the antidote, they already give it to you, Vitamin. phytonadione. These days, antidotes are very less common in the NCLEX, just so you know, Okay. but still, if you can remember it, that should be okay. But the one thing I want to highlight it for you, Gurpinder ji, remember the normal values of PTT, PT-INR is not given in the NCLEX, normal value. Okay. So Okay. that means you need to remember them by heart, right? Okay. Because these values, they will give you either in the question itself, in the standalone, right? Okay. Probably it's a standalone question, like single line, without case studies, right? So there they don't give you normal value. You have to Okay. remember it, right? But sometimes this question is given in the form of case study. Then there they sometimes give it, but I usually recommend, better to remember these values for safer side, because this is an important question for your exam. Yes. Any question until here? No.
No, rest of the interventions, everything exactly same, right? So Same. you don't have to copy paste again and again, but Okay. exactly same. And this medication, I never see it's an important medication, so you can easily take this medication out from your list, Okay. Depstron, right? Mhm. And that's all about the Coagulants. anticoagulants. Any question until here? No. Pretty simple, Yes. right? Okay, now let's do another brother sister. ठीक है, इसका एक और भाई बहन अभी देखते हैं, that is thrombolytic. ठीक है. Now you will see with me in a minute why they are like brother sister, because almost सब कुछ सबके तीनों के तीनों bleeding ही कर रहे हैं. ठीक है, at the end of the day. ठीक है. तो thrombolytics is basically the one, remember, which dissolve the clot. तो Clot. ये Yes. basically ये उसको break down करेगा. This is the one which is going to actually break down the clot, right? So Yes. that means this medication you can give in case of an emergency, remember? Okay. Yes. And then this especially you can give in case of the onset of the myocardial infarction within 4 hours preferable, if you can give it. Like Mhm. जल्दी से जल्दी दोगे तो ज्यादा बेटर है, क्लॉट ब्रेकडाउन हो जाएगा. Mhm. ठीक है ना. तो दिस इज वेयर यू कैन गिव दिस, बट हाँ यू कैन गिव दिस इन अनदर केसेस ऑल्सो, जहाँ पे भी क्लॉट आपको लग रहा है, कोई इमरजेंसी केस है, स्ट्रोक का पेशेंट आया, दैट पेशेंट इज बिकॉज ऑफ द क्लॉट इज इन देयर एंड यू वांट टू ब्रेक इट डाउन, you can give it. Or maybe pulmonary emboli patient right now in front of you, that Yes. patient has an acute condition, symptom चल रहे हैं, you want to break down the clot, you can give it too. तो बाकी जगह पे भी दे सकते हो, राइट. बट मेरा कहने का मतलब ये है कि थ्रोम्बोलाइटिक यू गिव इन केस ऑफ एन इमरजेंसी टू ब्रेक द क्लॉट प्रिटी फास्टर, अगर आप Okay. ये तोड़ना चाहते हो इसको जल्दी से, राइट. नाउ डेफिनेटली दिस मेडिकेशन, सेम साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स आई वुड से, यानी कि ब्लीडिंग करेगा, डिस्रिथमिया Bleeding. करेगा, राइट, टैकिकार्डिया, जो भी पीछे पड़ा सारे साइड इफेक्ट्स सेम ही आएंगे. वो आप इधर भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो डू दैट. एडवर्स रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन होता है जो हर मेडिकेशन के साथ जाता है, ये इसको आप उधर भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो डू दैट. बट हाँ, दिस मेडिकेशन कैन नॉट गिव इन सम कंडीशन. कौन सी कंडीशन में नहीं देनी है, इन विच कंडीशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड? ऑब्वियसली अगर कोई ब्लीडिंग चल रही है इस समय, यू कांट डू इट, Yes. right? If someone has a history of hemorrhagic shock, Hemorrhagic stroke shock. before, you can't give it. Maybe somebody has an intracranial problem, maybe उसका कोई accidental case हुआ है brain का, you can't give it. कोई surgery का patient है, recent surgery अभी recently past 2 months में हुई है, और वो specially that's related to intracranial or spinal related, right? Better not to give it. And I would say any surgery, कोई major surgery भी हुई है ना, like abdominal, pelvic, thoracic, अभी just recently हुई है, better not to give it. Hepatic or renal disease, even uncontrolled hypertension, right? ये Okay. ज्यादा ब्लड प्रेशर जो है इसका, that means the blood is already thin in there, right? Yes. That is Mhm. why the blood is moving fast. तो Yes. इवन recent prolonged CPR, किसी का CPR बहुत लंबे समय से चल रहा है, better not to give this medication to, right? Or someone has allergic already to this medication, so not to give this medication in that cases also. ठीक है जी. But what are you going to do as a nurse in case your patient take this medication? Definitely keep checking some blood work, right? Which Yes. blood work? These all blood works you need to do, right? Hepatic. Vital signs Yes. करते रहो, pulse proper check करते रहो, because this patient can go into dysrhythmia pretty easily, right? Yes. एंड मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग ऑल द टाइम. सो सारे एक्सक्रीशन जो भी बॉडी के हैं सब चेक करते रहो, राइट, स्पेशली यूरिन और ब्लड वगैरह के. ठीक है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं आ रही. एंड स्पेशली चेक न्यूरोलॉजिकल चेंजेस ऑल्सो, गुरपिंदर जी, बिकॉज वेन एवर यू सी द पेशेंट गेटिंग कंफ्यूज, lethargic और स्लरिड स्पीच, जहाँ उसको हेमी पैरालिसिस हो रही है, हाफ साइड बॉडी पैरालिसिस ऑलरेडी करने को स्टार्ट हो गई है, दैट मीन्स कुछ बैड चल रहा है, यू हैव टू लुक इनटू, राइट? That Yes. means overbleeding right now inside, right? So watch it right away. Or hypotension, tachycardia, right? ये भी Tachycardia. बहुत common है. And this is also pretty much, NCLEX asked many times this question. ये बहुत बारी आ चुका है कि जब patient these medications पे होते हैं, better not to do venipuncture or injections. Okay. If Mhm. try your best, if you can avoid it. Basically इनका कहने का मतलब ये कि बार बार पंक्चर मत करो, बार बार इंजेक्शन मत दो, ट्राई योर बेस्ट के ज्यादा पोक मत करो उस पेशेंट को, राइट. बट इफ यू सपोज टू डू इट,
try करो कि you apply the direct pressure on the site for pressure on few it. minutes. ठीक है जी? Mhm. And then handle the client gently as little as possible, क्योंकि जोर से पकड़ोगे तो ब्लीडिंग ब्रूसेस के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, कई बार स्किन में से ब्लड निकलना हो शुरू हो जाता है, ओजिंग वगैरह. सो बेटर टू होल्ड द क्लाइंट जेंटली देयर स्किन. एंड ऑल्सो टीच द पेशेंट के यूज इलेक्ट्रिक रेजर. ठीक है? नॉट टू यूज द रेगुलर जो होते हैं ना शेविंग वाले, जो बेटर नॉट टू Yes, यूज yes. दैट, राइट? एंड Mhm. जेंटल टूथब्रश, दैट इज Okay. पॉसिबिलिटी, राइट? So that this will be like a bleeding precautions, bleeding Yes. precaution we will also talk about in different chapters too. But these are the common bleeding precaution which you're supposed to teach to the patient as a nurse, right? And definitely withhold the medication if the bleeding develop, inform the doctor, and this is your antidote which you can give in case it's required. मान लो ज़्यादा bleeding होने लग गई, you need Okay. an antidote, right? तो Mhm. call the doctor, get the order for this medication. ठीक है जी? तो Yes. बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज, अभी एंटीप्लेटलेट पढ़नी है, बट मैं अभी बता देती हूँ कि ब्लीडिंग इज द प्राइमरी कंसर्न इन ऑल थ्री ऑफ देम. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज कॉल देम ब्रदर सिस्टर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या कर रहे हैं? ब्लीडिंग ही कर रहे हैं, राइट? Yes. तो Yes. विच वी हैव टू वॉच इट आउट. ठीक है जी? So apart from this, one thing I want to highlight it more, Gopinder ji, I forget to tell you. Thrombolytic medications, remember, maybe अपने कहीं लिख लो notes को side पे. They are ending into lace, 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 LASE, Yes. LASE. तो कोई Okay. भी medication you have that has the ending of the lace, lace, like Alteplase, Tenecplase, Okay. Retapplase, that means they are talking about the thrombolytic medications. If I go to the first page, maybe on the top, just to make sure I'm not forgetting anything. हाँ, this one also you're supposed to study. कि कौन से drugs or food you need to avoid with the anticoagulants Substances to also. avoid with हाँ, I anticoagulants. would recommend just skim and scan it. Like it's Okay. not a very important, but still good to study for Okay. safe side. Mhm. But हाँ, if I see in this box page number in your previous page regarding anticoagulants, you need to know apixaban name, Okay. rivaroxaban, Okay. warfarin, deltaparin, Okay. enoxaparin, Okay. fondaparinux. See this and Okay. parin also in the middle, like parin, Okay. right? Heparin, right? So Yes. basically what I want to say is why you need to remember these other names also, because sometimes they come in the questions, right? Yes. So if you see these names, you will get the idea, oh, they're talking about the anticoagulants, Anticoagulants. right? So it's better to read in that way. Any doubt until here for me? No. No, pretty easy so far. Yes. मजा आ रहा है पढ़ के? आ रहा है. Okay, that's good. Okay, let's talk about the antiplatelets now, right? So antiplatelets again, brother sisters again. ये basically क्या करते हैं? This medication, they basically, the platelets, we have platelets inside the body, right? Yes. So they don't get the platelets to get them together. बेसिकली ये उसको इकट्ठा नहीं होने देते, ठीक है? Yeah. चिपकने नहीं देते आपस में, राइट? तो what is going to happen if they don't allow them to do this medication, then the patient will have bleeding for long period of time, क्योंकि उसको इकट्ठा नहीं होने दे रहे, चिपकने नहीं दे रहे. That means what is going to happen now, the bleeding time will get prolonged now. Does it make Yes. sense? Yes. Yes. So again at the end of the day क्या चल रहा है? Bleeding, Bleeding. राइट? तो तभी मैं बोल रही हूँ कि सभी ब्रदर सिस्टर्स हैं बार बार, है ना? कभी कभी दे सेड वी कैन ऑल्सो यूज दिस मेडिकेशन विद द एंटीकोएगुलेंट्स आल्सो, बट हाँ, इफ यू यूज देम टुगेदर you have to be very, very, very closely monitoring the patient now for the bleeding. Okay. Okay? Yes. Definitely high risk for bleeding in this case, Mm-hmm. right? And yes, these medications, non-emergency condition, so that means long-term complications Doctor. को रोकने के लिए भी यूज की जा सकती है, right? Yes. So like myocardial infarction, coronary problems, stent problems, stroke patients, it could be anything. I never cram these conditions in my life. No. Why? Because when you see the questions, you automatically get the idea, oh, this is something maybe around the clotting related, maybe, right? Or could be at the risk for clotting as well. So I need to, think about the clot.
right? When you read all these conditions with me in different chapter, you will understand them more. What do I mean with the stroke and everything, right? Because once you have a good grasp of knowledge in each chapter, you automatically know this is about clotting at the end of the day, right? Mhm. Now, definitely again, don't give this medication when someone is bleeding or they're very sensitive. And this is exactly same side effects, adverse effects list. The one thing I want to highlight it for sure, which you also want to highlight it is Terry stools. ठीक है जी? Terry Yes. stools means blood. Bloody stools are रहे हैं उसमें. Okay. Right? So Terry Yes. stools means it's a lot of active bleeding right now. So bloody stools is in there, right? So Yes. if ever you see this word in the NCLEX, be very alert. Something happening bad right now. You have to do something right away. Take your Okay. that patient as the prioritization for sure, right? Yes. Now, almost same copy paste. We don't have to read this because it's exactly same, right? I don't think so. We have to read this one too because same intervention you can do here, what you did the before also. Any questions until here? No. No? Okay. Moving on to the next medications, we have positive inotropic cardiotonic medication. Okay, these medications we will discuss later on at the very last page of this chapter Okay. because they are talking about the same medication, this one, over there also. So that's why we'll talk about in there. So here I find language is very complicated. So better to delete here in this side Okay. and better to remember from the other side, right? Okay. Mhm. So I would suggest to delete it. The next Okay. medication we are going to study is the, again, very important for the exam is the digoxin. Okay. ठीक है जी? डाइजॉक्सिन इज बेसिकली कार्डियक ग्लाइकोसाइड मेडिकेशन है, ठीक है? सो बेसिकली डाइजॉक्सिन का इफ आई से वन वर्ड, इफ यू वांट टू मेक अ वन वर्ड नोट फॉर योरसेल्फ, डिक्रीज हार्ट रेट Yes. एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है? Yes. So these medications they actually decrease the heart rate क्योंकि mechanism of action में ना कुछ इनकी properties हैं, positive inotropic, negative Negative chronotropic, point. ठीक है? Negative dromotropic, NCLEX इतना तो नहीं पूछेगा, right? But मोटा मोटा बता देती हूँ कि ये जो होते हैं वर्ड्स दे आर रिलेटेड टू इधर कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट्स, द स्पीड ऑफ द हार्ट रेट, जहाँ फिर आप बोल सकते हो कि उसकी जो कंडक्शन की जो होती है वेलोसिटी वगैरह, उसको ये रिलेटेड ये टर्म्स यूज की जाती हैं, राइट? आइनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक, डर्मोट्रोपिक, मेडिकल लैंग्वेज में. बट एट द एंड ऑफ द डे वी डोंट हैव टू डू दिस क्योंकि एनक्लेक्स ये नहीं पूछेगा कि इनमें से पॉजिटिव आइनोट्रोपिक कौन सा है, ठीक है ना? Yes. So you need to remember is overall how do they work inside the body so you can treat that patient as an RN, right? Yes. So Mhm. you need to know basically at the end of the day, they do what? They decrease the heart rate, Heart right? rate. Because they are helping into these three, right? But for NCLEX, you don't have to study them more in detail, as I said, right? But remember, if they decrease the heart rate, where you can use them and where you cannot use them. So letter F and E, I recommend to read it a little bit. Sorry, Okay. F and G, F and G. You need to read little bit, look at into where you can give it, where you cannot give it this medication. Cannot, Yes. I will pull up first. So obviously, जिसका heart function नहीं हो रहा, right? Somebody whose heart functioning is not like already functioning enough, already low heart rate है, right? That means you Yes. cannot give this medication in there. So ventricular dysrhythmia, heart block patients, right? There it's not a good idea to give it. Even you will see with me later on. I don't know if you already had a chance go for endocrine system or not, but when you review the endocrine system, you will see hypothyroidism patient is also going down. Hypokalemia वाले का heart भी नीचे जा रहा है, right? Mm-hmm. So it's better not to give this patient these medication. और जिसका renal already काम नहीं कर रहा, why would you give it? Yes. Right? So this is a small list. Now, where you can give it, this one, I would say you can give in those medical conditions जहाँ पे आपको लग रहा है, this is you will learn more with me actually in ECG lecture, but for right now I'll give you the basic idea. जहाँ पे आपको लग रहा है ना हार्ट रेट बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है पेशेंट की,
right? Yes. Like it's more than a tachycardia, like Yes. more than 110 heart rate, right? There Yes. you can give this medication pretty easily. That means digoxin co you can give in case of the emergency, right? Where Yes. you think a patient का heart rate बहुत ऊपर जा रहा है and you want to put it down, right? तो Yes. कॉमन एग्जाम्पल अभी के लिए मैं बता देती हूँ। कॉमन एग्जाम्पल जैसे ये कॉमन वर्ड होते हैं, एट्रियल टैकिकार्डिया किसी का हो रहा है, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर हो रहा है, राइट? When you Yes. will see ECG class with me, you will see their heart rate is way high. In that case, we can give this medication because you want to put their heart rate down pretty quickly, right? Any questions until here, Grupinder ji? No. No, pretty easy. Yes. Okay, now moving on to side effects, adverse effect, right? So you are doing the heart rate down, right? That means if it go down, that is expected, right? Yes. Even if it sounds bad idea, bradycardia, but this is expected because you're giving to put it down, Yes. right? So nausea, vomiting, diarrhea, anorexia, पेट खराब होना, that is Expected. normal, expected, right? And then you have the headache, I would say is expected, right? Fatigue, weakness, expected. Drowsiness, expected. One thing I want to highlight it is just remember that, Grupinder ji, if you get anorexia, nausea, vomiting, diarrhea separate, राइट? लाइक Yes. एक दिया है या एक से ज्यादा दिया है बट सेपरेट सेपरेट दिया है आपको एग्जाम में, थोड़ा बहुत पेट खराब होना, दैट इज नॉर्मल, राइट? Okay. बट इफ यू हैव मल्टीपल जीआई सिम्टम्स टुगेदर एट द सेम टाइम, दैट मीन्स कुछ ज्यादा ही हो रहा है, Okay. Then we राइट? डज इट मेक put सेंस? under adverse effect. Then we will put it in the adverse effect. Yes, right? So Mhm. what are you going to do is, if they only give you anorexia, then side effect, only nausea, vomiting, side effect, or maybe just nausea, just vomiting, side effect, only diarrhea, side effect. But if you're getting two symptoms minimum or more than two together, any of them, that means something is bad right now. Yes. You need to look into. Does it make sense? Right? Yes. Yes. So that is why early symptom, this is a favorite question again of the NCLEX, just so you know, right? So early signs of digoxin toxicity, how do you know toxicity happening हो रही है? तो पहली बात तो पेट पूरी तरह से खराब हो चुका है, all symptoms together, right? Yes. That is your early signs. And remember late signs कौन से होंगे? Heart rate abnormalities और visual disturbances. ठीक है जी? तो Yes. this one which I missed on the top, visual problem, I'm Mhm. not expecting that. This is your the Adverse adverse effect. Why does it happen? Even akela blurred vision, why happen? Akela diplopia, Yes. why happen? Why just yellow vision? Why just photophobia? Phobia. Doesn't make sense, right? Yes. Now, every intervention part of this medication, just eat it. This is literally very, very important, just so you know. Like, you cannot even miss a single line here. Okay. Question can come from any point. This is very, very, very important. So read it very carefully, right? So the first one we have is the monitor for toxicity. Obviously, you're gonna monitor it, right? And then you're gonna check the digoxin serum level, right? Like therapeutic level में आ रही है medication के नहीं आ रही. Again, unfortunately, you need to remember it. The easiest one to remember is 0.5 to 2.0, right? So Yes. if it's less than 0.5, that again indicates medication is not working. Not You need to call working. the doctor, है ना? If it's more than 2, that means digoxin toxicity हो रही है. You need to Toxicity. stop the medication immediately and then watch your patient for symptoms quickly. Now here you can do vital signs, but I don't need all vital signs here, right? I only need maybe quickly check the oxygen quickly and then maybe check the patient pulse and respiratory rate. Why not temperature? I don't need that because Yes. why I'm checking the pulse? Because I want to make sure patient is not going into dysrhythmia, This means. right? Mhm. And then after that, quickly call the doctor. I don't have time to check the complete set of vital signs here. Does that make sense? Right? Yes. Mhm. Now, once you know this, the second thing they said in here is, sorry, the other nursing intervention, what they said is, if your patient have already hypercalcemia or hypokalemia problem or hypomagnesemia or hypothyroidism, then this toxicity can happen more in these patients. You know how I remember it? I never cram this list. I just simply tell my brain,
कुछ भी हाइपो हो रहा है, कुछ भी हाइपर हो रहा है, बेटर टू वॉच इट आउट। ओके। ठीक है ना, शॉर्टकट। यस ठीक है ना, यस। बिकॉज आई एम नॉट गोना प्ले विद इट, किसी को कुछ हाइपो हो रहा है या हाइपर हो रहा है, डज इट मेक सेंस? यस। Right now, definitely older patients, they are more sensitive to this medication, right? So be very careful monitoring to them. एंड पोटेशियम लेवल साथ के साथ चेक करते जाओ प्लीज। 3.5 to 5.5 जो हम लेते हैं वैल्यू, दैट इज फॉर द एनक्लेक्स लेवल्स फॉर श्योर, यस। बट सम बुक्स विल टेल यू 5 only until, ओके but I would say for NCLEX take until 5.5, right? ओके। So 3.5 to 5.5 is your the potassium value which you want to consider in, right? Now, definitely, if this patient is also taking potassium losing diuretic, remember losing diuretic is the loop diuretic, लूपिएटर। Lasix, furosemide, right? यस यस। If patient taking that or maybe corticosteroid, you want to watch for further hypokalemia in there. यस क्योंकि हाइपोकैलेमिया से क्या हो सकता है, टॉक्सिसिटी और बढ़ सकती है डाइजॉक्सिन की। रिमेंबर वी टॉक अबाउट इट इन द प्रीवियस लेक्चर, राइट? यस यस। Like lithium and digoxin, you better be careful when you're giving someone those diuretic medications, right? यस And I mentioned that I will discuss in the next class when we discuss the digoxin, right? यस So यस। this is the reason. ये reason ओके। है. I hope you're getting my point now, like link यस। in between, right? बता देना गुरपिंदर जी, समझ नहीं रहे थे। I can always explain back again, right? यस। And then instruct the patient to avoid the over-the-counter medications and also advise the patient to eat the food high in potassium. जैसे ये examples are common, food high in potassium, which I think you already know this, right? यस And यस। then most important is apical pulse rate check करना, यस ठीक है? यस। और याद रखना 1 full minute के लिए यू हैव टू चेक एपिकल पल्स रेट। एक चीज यहाँ पे नहीं लिखी हुई तो आप प्लीज ऐड ऑन कर लीजिए, इफ इट्स लेस देन 60 बीट्स पर मिनट इन अडल्ट पेशेंट, अगर अडल्ट पेशेंट का लेस देन 60 है, then definitely you need to hold this medication, you can't give it, है ना? क्योंकि this यस यस। medication decreasing heart rate. But यस। remember, only for the NCLEX purposes I'm taking this one. If the age of the client is less than 3 years old, then we consider the value is 90. ओके अगर किसी का 90 से नीचे है, we do not give this medication in this age group. ओके And अगर 3 years से ऊपर है, then we only consider 60. ओके। ठीक है? And I'm only doing this for your question purposes, but I know when we go for practicum, we work somewhere, तो थोड़ा different होता है, right? But this is what we look into for the NCLEX purposes for sure. So 60 और 90 वाली वैल्यू याद रखना। इन दोनों केसेस में अगर if it goes down, then you cannot administer this medication. और हाँ, when the patient is going home, this is very important कि this is your job as a nurse to explain the patient how to check the pulse, check the like how pulse. to measure apical pulse at home, right? और Yes. उसको ये भी जरूर बताना कि दोनों तरफ हाथ मत रख ले, ठीक है ना? Okay. एक ही तरफ रख के चेक करनी है, दोनों तरफ मत प्रेस कर देना, उसको ये भी जरूर बताना है। एंड नॉट प्रेस टू फर्मली ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो यू नीड टू एक्सप्लेन द पेशेंट एट द सेम टाइम। और या डेफिनेटली उसको साइनस सिम्टम बताओ, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के क्या क्या हो सकते हैं अर्ली एंड लेट, एंड वेयर दे हैव टू कॉल इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। और एंटीडोट जो इसका है दैट इज द डाइजॉक्सिन इम्यून फैप। ठीक है जी? Okay. एनी क्वेश्चंस अंटिल हियर? No. Interesting cardio med so far? Yes. Yes, Yes. okay. चलो जी, दैट्स गुड। नेक्स्ट जो है डायूरेटिक्स है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी, वी ऑलरेडी डिड दिस Done. डायूरेटिक्स, राइट? सो Yes. थायाजाइड इज आल्सो डन, लूप इज आल्सो डन, पोटेशियम स्पेयरिंग, ऑस्मोटिक हमने सब कर लिए हैं, राइट? Yes. सो वी जस्ट gonna make them done. एंड देन अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स ये हमने नहीं करने, Okay. पर हाँ, इसका मैं एक बात जरूर बोलूंगी, यू नीड टू रिमेम्बर द नेम जॉसिन। Just say. ठीक है? जॉसिन नेम, इफ द मेडिकेशन नेम कम जॉसिन, इसका क्या याद रखना है आपने? एक सिंगल वर्ड ये याद रखना है कि ये दिस इज बेसिकली वेजो डायलेटर, तो बेसिकली डिक्रीज ब्लड प्रेशर करती है एट द एंड ऑफ द डे, Okay. इन केस यू गेट अ बाउंसर क्वेश्चन, तो थोड़ा Okay. बहुत आइडिया होना चाहिए, राइट? Yes. ठीक है जी?
एंड देन आफ्टर दैट ये मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी, नंबर 8 वाली, यू कैन कंप्लीटली क्रॉस इट आउट, ठीक है। ओके। एंड देन एस इनहिबिटर्स अल्प्स वाले हम लोगों ने कर लिए हैं, सो दिस इज ऑलरेडी डन, राइट। यस। Okay, and then next we have the anti-angina. Again, very, very important. Nitro medication. ठीक है जी। यस। तो नाइट्रो मेडिकेशन जो है, आई वुड से वन वर्ड, वेजोडाइलेटर अगेन, ठीक है। नाइट्रेट्स बोलते हैं वैसे तो इनको। और जो इसकी मेडिसिन होती है, द मेडिसिन नेम इज नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन कई फॉर्म्स में आती है, राइट। एन आइसोसोर्बाइड, ये भी आपने नाम याद रखना है फॉर श्योर, ठीक। ओके। ओके। ये नहीं जरूरत कि डाइनाइट्रेट मोनोनाइट्रेट याद रखना कि नहीं रखना, बट यू हैव टू रिमेंबर आइसोसोर्बाइड एंड द नाइट्रोग्लिसरीन नेम फॉर श्योर, राइट। यस। वेसोडाइलेटर है, तो डेफिनेटली कुछ नीचे लेके जा रही है सब कुछ, है ना। तो विल टॉक अबाउट दैट वन टू, राइट। तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज द लाइक प्री लोड आफ्टर लोड, वो कह रहा है कि नीचे लेके जाएगा, तो ऑक्सीजन जो है, जो डिमांड जो हार्ट ज्यादा कर रहा था उसको थोड़ा इम्प्रूव करेगा। दैट मीन्स कि हार्ट की तरफ ज्यादा ऑक्सीजन जानी स्टार्ट हो जाएगी, right? That is why, remember, we always say we give in chest pain, है ना, यस। this यस। यस। medication. And then where you cannot give this medication, अगर किसी का already blood pressure नीचे है, hypotension, right? Increased intracranial pressure या severe anemia वाले patient जो है, उनको ये medication work नहीं करेगी better, और जो किसी का rectal dysfunction हुआ है, ठीक है। So far, this is not being tested in the NCLEX, what I know, but if you can remember it, इट्स ओके, ठीक है, ओके। अगर अगर याद कर सकते हो तो, ठीक है। और इसके बाद ये बताया जाएगा इसका मेन जो साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट है। हेडेक हो रहा है, जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, डिजीनेस, वीकनेस, फेंटिंग वगैरह, ये सब कॉमन है, राइट। बिकॉज वंस यू टेक दिस मेडिकेशन टू रिड्यूस द पेन, एक्चुअली टू इम्प्रूव द ऑक्सीजन डिमांड टुवर्ड्स द हार्ट, है ना। तो दिस इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि मैंने अभी बताया कि दिस मेडिकेशन इज अ वेसोडाइलेटर, राइट। वेसोडाइलेटर। तो डायलेशन ज्यादा कर रही है, ब्लड ज्यादा आपका हो रहा है पतला, नॉट पतला, बेसिकली मैं पतला तो नहीं बोलूंगी, डायलेट ज्यादा, जैसे उसको ज्यादा स्पेस मिल रही है अंदर ऑक्सीजन इंप्रूव करने के लिए। सो डेफिनेटली दिस इज गोना बी बेटर, दिस इज द एक्सपेक्टेड इन दैट केस, कि उसका ब्लड प्रेशर नीचे चला जाए एंड द पर्सन फील वीक, टायर्ड, फेंटिंग एट द सेम टाइम, है ना। यस। But you're not expecting paler flush, right? So this is adverse effect. Let's take it out as adverse effect, है ना। और रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया, ये भी इसका वो है, दैट इज द साइड इफेक्ट, क्योंकि हाइपोटेंशन हो रहा है ना। यस। तो यस। यस। टेकिकार्डिया इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड एट द सेम टाइम। ड्राई माउथ, अगेन साइड इफेक्ट। और एक इसमें लिखा नहीं है, विच इज अनदर वन कॉमनली टेस्टेड इन द एग्जाम, रिमेंबर पाल्पिटेशंस। पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशंस भी एक्सपेक्टेड है, ओके। पाल्पिटेशंस, ठीक है जी। कई बारी दिल की धड़कन नहीं सुनती, लाइक हाथ यस। पे यस। देते हैं, दैट इज द पाल्पिटेशंस, खुद को सुनाई देती है, राइट। काफी तेज होती है, दैट इज पाल्पिटेशन, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द टेकिकार्डिया, यस। right? Now, this medication most common the way is the sublingual, right? So sublingual की तरफ जाएंगे तो definitely sublingual means कि थोड़ा बहुत patient को समझाओगे how to take this medication, right? And We when have to you put under take the it. tongue. Yes, very good. Under the tongue until fully dissolved. This is Yes. something you need to teach the client, not to swallow the medication, right? Yes. And then instruct the client to sit down before taking this pill, क्योंकि dizziness जो है बहुत quickly हो जाता है after taking this medication. But you can give offer sip of water before you give this medication, क्योंकि उससे absorption अच्छा हो जाता है। But हाँ, अगर emergency है, patient पानी नहीं पी सकता, that's okay. That is not a mandatory, but just put the medication under the tongue, Yes. right? Mhm. Vital signs checking, very, very important, I would say, for the nurses, because hypotension is expected, right? So, especially, I would say, as you know, the sublingual medication in the chest pain, we can take 3 doses maximum, right? Which is Yes. 5 minutes apart. That is this point they have covered up, right? So remember, after taking the first dose,
We have to Before you call give, 911. no. If No? the patient at home, yes, if the patient at home, what I'm Mhm. trying to saying is, if the patient at home, then they have to call 911 after taking the first dosage, Okay. right? क्योंकि जो Yes. recently American Heart की जो guidelines जो modify हुई थी around 2018-19 में, I remember, they said कि थर्ड डोज के बाद नहीं कॉल करनी 911, यू हैव टू डू आफ्टर फर्स्ट डोसेज, First dose. बिकॉज बहुत ज्यादा पेशेंट्स जो है इस तरह के हॉस्पिटल में काफी डेथ हुई थी इन उन दिनों Okay. में, राइट? सो बेसिकली दे चेंज द गाइडलाइन सिंस देन, एंड ऑफ कोर्स इट्स रिफ्लेक्टेड इन द एनक्लेक्स आल्सो, राइट? But if your patient is at hospital and you are administering this medication, remember that, Gurpinder, being as a nurse, after giving the first dosage, you need to administer the blood pressure quickly before you give the second dose or third dose. Okay. क्योंकि hypotension is very common. Yes. और अगर hypotension बहुत ज्यादा हो रहा है तो दे नहीं पाएंगे. You need to think Yes. about an alternative medication in that case. Depend कि क्या situation है client की, right? Yes. Mhm. So this is very important to remember that as per the exam questions. And patient को बताना कि some burning sensation can might be indicated too, right? And also where to store this medication. Yes, NCLEX asks these questions also. You need to do the store this medication dark, tightly closed bottle में. ठीक है जी? Or they can take acetaminophen for headache if it's required. ठीक है? Okay. And this is also which I was talking about. ये पहले जो tested हो चुका है. हाँ, ये याद रखना कि expiration date भी होती है बॉटल की. ठीक है? Yes. एक बार जब बॉटल खुल जाए, it is within 6 months. ठीक है? Okay. So within 6 months, good to use, but after that it's get expired. Okay. ठीक है? Yes. Now, this medication also come in the form of spray also, sustained release और patch वगैरह. Spray कभी tested नहीं हुआ, sustain कभी tested नहीं हुआ, but yes, you need to remember the patch. Okay. ठीक है? पैच और ऑइंटमेंट वगैरह थोड़ा बहुत देखेंगे जरूर. तो पैच जो है, instruct the client to apply the patch to the hairless area. पहली बात तो hairless area पे लगाना है, और every time new patch, new site every time, right? Okay. Don't put the patch on the same site every time, right? Mhm. Especially, what do we recommend is, we tell the patient to try their best at the continuous, if there is no continuous order by the doctor, what do we do is, in the nighttime, we remove the patch for a couple of hours, and then in the next day, we just put it like in the, on the other side, right? Other side. Because we don't want the patient to get the tolerance effect. Yes. But most of the time, what I know in practicum, when you see the patients, they do require the patch 24 hours, right? But Yes. again, it Yes. depends the physician order. What do we have in there? So always follow Yes. that. And then regarding ointment, I would say just, wear the gloves, and then after wearing the gloves, you need to squeeze a ribbon of ointment on your hand or the finger. जहाँ पे भी आपने लगाना है, you have to put it like on the Yes. top of it, right? Mhm. Sometimes if you cannot put it on the top of the glove, then maybe let's take a stick. तो छोटी सी स्टिक वगैरह लेके, और मे बी ईयरबड्स कई Mhm. जगह पे लेके लोग उसके ऊपर एक लगा लेते हैं स्मॉल रिबन. That is how you can apply it to the topical ointment. And remember, ज़्यादा मोटी मोटी लेयर नहीं लगानी. You have to put it like very thin layer, right? Thin layer. Yeah, thin layer. And yeah, so this is mainly what we recommend in there. Again, this is least tested Okay. topical appointment, but it's still good to know, right? Yes. Mhm. Uh, Gloves, वगैरह, I think I already covered up. Yeah, main point is also another one. Do not apply on the chest area where you think in case of an emergency, If it- वो defib का pad लगाओगे. Yeah, Yes. better not to apply in those cases Mhm. because burn हो जाएगा. It Yes. can leave the skin burn in that cases, right? Any questions until here? No. All good, pretty easy. Yes. Right? This is a very good clinical judgment. I highly recommend to read it after the class. If you Okay. do not understand anything in there, let me know so I can help you around for sure. But this is Okay. exactly same thing they talk about when to take first dose, second dose, third Yes. dose, right? And when do we have to document at the end. Yes. Now, beta blockers was already covered up before. Channel blockers is also already done. ठीक है जी. Yes. Mhm. Peripheral vasodilator भी हो चुके हैं. This is also already done. You know how?
if you see the examples on the top, ठीक है, Yes, I got you will it. be like this is same thing, जॉसिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, Injectable. ये सब पड़े हुए हैं, ठीक है। Yes. तो थोड़ा सा कॉपी पेस्ट बोल सकते हो, है Mm-hmm. इसमें, बट you don't have to do it again, you already know this, right? Okay. You Yes. can take it out. ये डायरेक्ट एक्टिंग वाला नहीं पढ़ना, डायरेक्ट Okay. एक्टिंग आर्टीरियोरल वेसोडाइलेटर, जस्ट टेक इट आउट इन अ वे। एंड देन या एंटी डिसरिथमिक जो मेडिकेशंस हैं, इनमें सिर्फ हमने नेम याद रखने हैं मेनली, विच वन जो हाई हार्ट रेट में आप लोग मेडिकेशंस देते हो। ओके, थोड़े बहुत तो इसमें भी हो चुके हैं, लॉल लॉल वगैरह दिए हुए हैं, आई कैन सी इट, बट हाँ, ये वाली मेडिकेशंस कभी कभी आ जाती हैं। यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस वन, एम्यूड्रॉन। Where is it? एम्यूड्रॉन नहीं हुआ ना अभी तक, राइट? Yes, yes, yes. एम्यूड्रॉन, राइट। दिस वन यू नीड टू रिमेंबर, अडीनोसिन। Okay. ये भी नहीं हुआ अभी तक। ये दोनों मेडिकेशन को ना अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगी डिटेल में, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज वी कैन डिस्कस देम इन ईसीजी, because there is a one kind of ECG where we're gonna give this medication in there also. Then I will come back to this slide in that case. So pretty easy. But if you really want to read it, let's say as a part of homework today, तो just read these interventions. Okay. सिंपल ये इजी बताया है कि हार्ट रेट वगैरह चेक करते रहो, कार्डिक मॉनिटरिंग पे डाल दो, है ना, दिस इज व्हाट दे ऑलवेज गonna टेल यू, फिर विद फूड खाना है, क्या करना है। बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, बेटर टू वेट मे बी अंटिल आई फिनिश द ईसीजी, तो इस मेडिकेशन पे तब वापस आएंगे, Okay. ठीक है। इवन जो ये वाले हैं ना, डोपुटामीन, डोपामीन, एपिनेफ्रिन, इनको मैं थोड़ा ब्रीफ बता देती हूँ, बट व्हेन वी गोना डू द ईसीजी लेक्चर अगेन, थोड़ा कोरिलेट होता है आपस में, ठीक है। Okay. डोपामीन, डोबुटामीन, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो है, ठीक है, आई वुड से ये सारे आपस में ना ब्रदर सिस्टर है अगेन, Okay. सभी आपस में। Mm-hmm. सुनने में काफी अच्छे नाम है, बट सभी ब्रदर सिस्टर लग रहे हैं मुझे, बहन भाई लग रहे हैं स्टिल, क्योंकि सभी एक ही काम कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। Yes. तो हाँ, बट किसी का ये है कि किसी को द वन यू गिव इन द वन कंडीशन, द अदर वन यू प्रेफरेंस इन द अदर कंडीशन बिकॉज ऑफ देयर वर्क एंड एवरीथिंग, है ना। Yes. बट हाँ, सारी इमरजेंसी मेडिकेशंस हैं, ये मैं बता देती हूँ फॉर श्योर, ठीक है जी। तो डुबूटामिन जो बेसिकली है, डोपाम नहीं, पहले तो मैं ये बताऊं कि सब में कॉमन क्या है ना। तो बेसिकली ये सारे जो है ना, बेसिकली दे ऑल दीज वंस, दे गोना डू लिफ्ट द बॉडी अप ऑफ द पेशेंट, ठीक है, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, they're gonna lift the patient body up basically, right? So dobutamine, basically here in the books they only give you simple line, okay, this is we gonna use with the heart rate patient, or maybe the client undergoing the CABG, maybe we're gonna use this one, है ना। But I want to add it up in here, अगर आप थोड़ा लिखना चाहते हो, सुनना चाहते हो तो देख लीजिए, है ना। तो डोबूटामीन जो बेसिकली होता है ना, वो हार्ट की जो कंट्रैक्शन होती है ना, द कंट्रैक्शन इज बेसिकली इंक्रीज्ड, राइट, एट द एंड ऑफ द डे, डोबूटामीन जो बेसिकली होता है, ठीक है। तो डोबूटामीन को आप बोल सकते हो कि कार्डियक आउटपुट बढ़ा देगा पेशेंट का एट द एंड ऑफ द डे। अगर कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, उसकी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो दैट मीन्स कि हार्ट अच्छी तरह पंप करने लगेगा, Mm-hmm. जो हार्ट नहीं पंप कर रहा था, हार्ट अच्छी तरह से पंप करने लग जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके हार्ट को एक तरह से उसको ताकत देगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू गिव लाइक यू कैन से टू द हार्ट, इट्स बेसिकली गिव अ डोज टू लिफ्ट द बेसिकली हार्ट एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाई when you have emergency cases like heart failure patient और cardiogenic shock, और मे बी किसी का कार्डिक आउटपुट काफी लो जा रहा है, और मे बी पोस्ट सर्जरी के बाद, कार्डिक सर्जरी के बाद उसका कार्डिक आउटपुट अच्छी तरह से नहीं जा रहा किसी भी कारण के कारण, देयर Mm-hmm. यू गिव द डोबूटामीन बेसिकली, ठीक है जी। Yes. तो डेफिनेटली अगर ये हार्ट को ऊपर लेके जा रहा है, तो कॉमन एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट क्या होगा, टैकिकार्डिया वगैरह, है ना, Mm-hmm. अरिथमिया हो सकता है। हाँ, टैकिकार्डिया के साथ चेस्ट पेन भी हो सकती है। नाउ चेस्ट पेन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, सो चेस्ट पेन डेफिनेटली इट्स एन एडवर्स इफेक्ट इफ इट्स गोइंग टू बी हैपन,
But tachycardia के साथ साथ blood pressure can also be changed. तो patient can have hypertension initially and then can go in hypotension as well. hypertension दोनों expected हैं क्योंकि obviously ये tachycardia हो रहा है तो blood pressure भी change होगा, है ना? यस नोजिया हेडेक भी होगा इसके साथ, है ना? बट बेसिकली अरिथमिया बैड और चेस्ट पेन बैड है, डेफिनेटली, है ना? तो नाउ वी गोना टॉक अबाउट दी वेयर यू कैन नॉट गिव दिस मेडिकेशन। ऑब्वियसली अगर कोई हाइपोवोलीमिया में जा रहा है ना, पेशेंट की बॉडी ऑलरेडी डाउन है, या किसी को अरिथमिया ऑलरेडी आ रहे हैं, यू बेटर नॉट गिव दिस मेडिकेशन इन देयर, क्योंकि आप पेशेंट को और ज्यादा कर दोगे, राइट? यस नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ नर्स इज इन देयर इज कि आप उसकी कॉन्टिन्यूस कार्डियक मॉनिटरिंग पे पेशेंट को डालो, उसके वाइटल साइंस चेक करते रहो, कीप चेकिंग द पेशेंट फॉर द सिम्टम फॉर द चेस्ट पेन ऑल्सो, उसकी आईवी साइड चेक करते रहो, इन्फ्यूजन पंप के जरिए लगाते हैं। रिमेंबर दैट ये जो सारी मेडिकेशन होती है ना, ये सभी दीज ऑल मेडिकेशंस आर इमरजेंसी मेड्स एंड यू बेसिकली यूज इन्फ्यूजन पंप फॉर देम टू कंट्रोल इट, क्योंकि आप नहीं चाहते एकदम ज्यादा डोज चली जाए पेशेंट को, यस ठीक है ना? तो डोबूटामीन समझ आ गया तो सारी समझ आ जाएंगे बेसिकली, आई वुड से। तो नेक्स्ट वन आई विल कंसीडर नाउ डोपामीन, राइट? ओके डोपामीन, डोपामीन का इन्होंने ऑलरेडी बुक में ये बताया हुआ है, हियर दे ऑलरेडी मेंशन यू कि बीपी इंक्रीज कर रहा है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर रहा है ना, रीनल का ब्लड फ्लो इंक्रीज कर रहा है ना? तो ऑलमोस्ट ब्रदर सिस्टर निकल गया, क्योंकि सारा कुछ ये भी बढ़ा रहा है एट द एंड ऑफ द डे, है ना? तो क्या होता है इसमें, लेट्स सी टुगेदर। आई वुड से जो ये डोपामीन होता है ना, डोपामीन मेडिकेशन मेन जो इसका है हार्ट रेट, दैट विल ऑल्सो गो हाई, वेरी हाई। ओके डोबूटामीन के साथ हार्ट रेट इतना ज्यादा नहीं ऊपर जाएगा जितना डोपामीन के साथ ज्यादा जाएगा, इसमें ज्यादा जल्दी इंक्रीज करता है क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर भी बहुत शूट अप कर जाता है, राइट? सो आई वुड से जो पेशेंट शॉक का है, यू नो, जो स्पेशली शॉक में जा रहा है, यू बेटर गिव डोपामिन इन दैट केस, क्योंकि आपको ओके जल्दी जल्दी उसका हार्ट रेट भी ऊपर लेके जाना है, उसका ब्लड प्रेशर भी ऊपर लेके जाना है। डज इट मेक सेंस? है यस ना? तो ऑब्वियसली या इफ द पेशेंट हैज द सीवियर हाइपोटेंशन वाला पेशेंट, जैसे मैंने अभी शॉक की एग्जांपल भी दी है, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, उसमें कर सकते हो। हाँ, ब्रेडिकार्डिया किसी के पेशेंट का चल रहा है ना, विद हाइपोटेंशन के साथ किसी भी कंडीशन में यू कैन गिव दिस मेडिकेशन एज अ प्रेफरेंस टू। बाकी इसका सारा सेम ही आएगा, कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। बट हाँ, मेनली व्हाट आई वांट टू से इज कि डोपामीन is best for shock patients and dobutamine best for the heart failure patients। ठीक है, बट है दोनों बाय द एक ही तरह ओके काम कर रहे हैं बॉडी में, एक यस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? तो इफ यस पूरे एग्जाम में यू कैन नॉट रिमेंबर एनीथिंग, लेट्स से, बट एटलीस्ट रिमेंबर कि दिस इज एट द एंड ऑफ द डे, लिफ्ट द थिंग्स अप, है ना? यस यू कैन स्टिल डू द क्वेश्चंस, आई वुड से। ठीक है जी? एनी यस क्वेश्चंस अंटिल हियर? नो No? Okay. Now, similarly, we have epinephrine and norepinephrine, right? ये भी भाई बहन ही है, I would say, सभी के, ठीक है? तो when your patient especially into cardiac arrest, तो हार्ट को स्टिमुलेट करेगा, that is epinephrine, ना? एपिनेफ्रिन When especially someone has asthma attack right now, allergic reaction right now, so you give the epinephrine because in that case bronchodilation gonna happen, जो lungs की जो होती है ना वो dilation होगी, patient easily breathe करेगा, ठीक है ना? उसके अलावा आइस की जो दिक्कत होती है, माइड्रेसिस वगैरह, उनमें भी दे सकते हैं। लोकल वेसो कंस्ट्रिक्शन कभी करवानी हो उसमें भी दे सकते हैं, ये लोग बोल रहे हैं। बट हाँ, मेनली जो होता है इमरजेंसी में 1 and 2 पॉइंट, ठीक है जी? तो अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाए एकदम, यू आर थिंकिंग कि हाँ कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि उसका पूरा हार्ट पूरा लिफ्ट हो, राइट? यू ट्राई टू गिव एपिनेफ्रिन इन दैट केस, दैट इज अ बेस्ट फ्रेंड। और किसी को मान लो एलर्जिक रिएक्शन सीवियरली हो गया, यू गिव एपिनेफ्रिन। तभी तो वो बोलते हैं, रिमेम्बर गुरपिंदर, एपिपेन, यस यस आई राइट? रिमेम्बर व्हाई डू वी गिव द एपिपेन? क्योंकि इफ यू गिव द एपिपेन विद द ब्रोंकोडाइलेशन द पर्सन कैन स्टार्ट ब्रीदिंग बेटर, यस right? So that's why you use that medication.
ठीक है जी, pretty simple है, nothing complicated in here. ठीक है, सभी के side effects, adverse effects, I would say for Almost each of same. these medication, everything is same. Even the nursing interventions is also same, right? The norepinephrine, again, same thing. This is again mainly for cardiac patient, cardiac arrest patient, right? And also vasoconstrict. Okay, now what is the difference here? It does vasoconstrict and increase the blood pressure at the same time. So watch it out कि जिस पेशेंट को दे रहे हो आप उसका बीपी और कंस्ट्रिक्शन ज्यादा अंदर करवानी है, हमने डायलेशन नहीं करवानी है अभी. Okay. Then you give norepinephrine in that case. ठीक है जी. Maybe let me give you some more examples. Mm, so epinephrine is basically you can also give in septic shock also. Septic shock. Septic shock also. Anaphylaxis I already recommend है ना, cardiac arrest भी बता दिया मैंने. And then we have the norepinephrine. Let me see if I can find something more for you. So norepinephrine, हाँ, I would say vasodilator shock वाला पेशेंट जो है, because उसको आपने कंस्ट्रक्शन करवानी है, there you can give the norepinephrine. Yes. Hmm. ठीक है जी. Any questions until here? No. No, pretty easy. Complicated नहीं लगा? एक बारी दोबारा पढ़ूंगी फिर. Very good. Very good. The last one I want to say before we go today, any medication you see statin at the end, remember this is for your cholesterol patients. You know, जिनके Yes. high cholesterol levels होते हैं, the patients who have a high cholesterol levels, Yes. you want to lower down, you want to give statin. Yes. And that is why you don't have to read this all. Just remember Yes. this is for your cholesterol patient. You can still handle the question. Yes. ठीक है जी. Any questions until here? No. No? Very good. Congratulations. With this way, we're done with the cardiac medications. All done. Yes. No questions anymore for me? No. No. Okay, perfect. Now, let me see here. Give me 1 second.